I'm proud. I think it's a very proud moment, for such big brands to come and present themselves in India. Um, I think all we sabhi log hai कि all should come in India, and they all should. But yes, now that we're talking about bikes, I mean, I'm a big fan of bike, by the way. So my college days have only. So I used to ride those days. अभी तो खैर मैं खुद का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखती हूँ. But yes, I'm just happy to be a part of this amazing celebration. आप बाइक करते हैं? एक ज़माने में हुआ, कॉलेज के दिनों में हुआ था. अच्छा कुछ मैं टोटल रफ एंड टफ लाइक अ टॉम बॉय. हाँ, वो मैं थी. तभी मेरे बाल छोटे से थे. अब खैर my school friends they met me after some time and they were like, तू पूना पार्टनर से लंबे बाल. जैसे जैसे आप कट मारते हैं, आप भी कट मारते दिखाएंगे। मतलब बड़ी हरकतें की. आई डोंट थिंक मुझे बोलनी चाहिए कैमरे पे. हमारे माय कॉप्स आर आल्सो वाचिंग दिस. सो नहीं, मैं बड़ी सीधी सादी बड़ी शरीफ लड़की हूँ, तो आई डोंट डू एनी So ma'am, DSBK bike has given us very much safety measures. So what are your views on that? Like in India we don't have that education for the bikers. So what are your views? See, that is something I don't like, honestly. With respect to those Indians जो हेलमेट पहनकर चलाते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को हेलमेट, मतलब उनके लिए हेलमेट ना पहनो, इट्स वेरी कूल थिंग. दे नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट कूल. कॉलेज के दिनों में मैंने तो खैर मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों को देखा, विद बाइक एक्सीडेंट्स एंड स्टफ, एंड आई एम ग्लैड दैट दे आर कमिंग विद सेफ्टी मेजर्स, एंड आई थिंक everyone should take care of their safety, because जान है तो जहान है. अच्छा मैं तो आप कितना सेफ्टी यूज करते थे जब आप बाइक चलाते मैं सीट बेल्ट लगा के बाइक चलाती हूँ. हम जैसे लोग को जरूरत पड़ती है. Okay ma'am, so when you have said कि आप बाइक चलाते थे, so what were your favorite models? ये हम बात में मतलब मैं नहीं चाहती मुझ में भी कुछ भी. मैं I'm finding I've done all my मस्तीज in my life. I don't think किसी भी लड़की ने उतनी ज्यादा हरकतें की. जो भी मैंने करके सब छोड़ दिया है. मतलब मैं खुश हूँ मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा. Last question. मैं कोई फनी इंसिडेंट जो हमसे आप शेयर कर सकते हैं बाइक राइडिंग की कॉलेज डेज में, क्योंकि आपने काफी कुछ कहा है. Last question, ma'am. Like I'm just thinking nothing was funny there. It was quite no. Lastly, ma'am, what safety measures would you like to tell to the audience? I think every guy and every girl, whoever is, doing all the wheelies and stoppies and all that, just a request, my beautiful people. College के दिन ना वो थोड़े होते भी है ना. We are like with this गरम खून, ऐसा कि हाँ हमारे हमको सब कुछ करना होता है उस वक्त लाइफ में. हम सबको अमिताभ बच्चन बनना होता है लाइफ में उस वक्त. बट प्लीज अंडरस्टैंड, आपके माँ बाप हैं पीछे जो आपका वेट करते हैं. आप घर पे वापस जाओ तो बस वो उतना आप सेफ्टी मेजर पकड़ के भी चलोगे ना, आप फिर भी चलोगे. So that's it, yes. Thank you. लास्ट क्वेश्चन प्लीज. हाँ? आप जाके रेसिंग देखने यूएई में. Yeah, now, what would you like to say? And as a sport in totality, what's your opinion? I think it's amazing. I think it's so great that so much of this is now coming to India. I think the world is looking to India now in terms of fashion, in terms of sport. I think it's so exciting. This is one of the most exciting times to be in India. I remember many years back, when I started doing advertising, I used to be one of the few girls in India who used to ride a bike. I've done a lot of ads where I used to ride a bike, and over the years I've seen so many young women have taken to biking. So many young women are getting onto their bikes and being avid bikers. It's really cool. I think it's a really cool sport, and I'm very very excited. आप अपने आप को future में देखते हैं Tina to participate in something like this? Your passion maybe for biking and racing and learning it. Yeah, so my only worry until now used to be that biking is not, if you're doing it on the roads, it's not very safe.
But I think with something like this, with something like a DSBK, because it's going to be done, you know, with all the safety protocols in mind, I think I would love to give it a shot. For women out there, Tina, what message would you like to give out? We've seen a lot of aspirant women also who would want to try the sport, get into it, Yeah, but they yeah. do have not a nod from family, because Yeah. I think in India we still consider this as a taboo. Women will not ride bikes, and Yeah. it's too heavy for them. What would you like to say? I think, you know, this is what I've told women all my life. My first rule in life is to not listen to what people say. Don't listen to what your family say. Don't listen to what your neighbors say, what your chachi, mami, whatever says. Do what your heart feels like. Go after your heart, because it's one life. You only live once. Do everything you want to in this one life. Very well said, Tina. Thank you so much. Thank you. Any question, anyone? Thank you. Thank you. I think it was wonderful. I was just listening to नासिर भाई, और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जेन्युइनली इंडिया में अगर हम देखते हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ हमारे वर्ली सी फेस में यहाँ पर, बिकॉज इट इज़ मतलब लोगों में इंटरेस्ट बहुत है, बट आई थिंक उसको सपोर्ट करने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है. सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इज ऑसम, एंड अगर ये आता है यहाँ पर तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा. Answer. What would you like to add? Well, I like one point which he said that नासिर जी कि बाइक सब चलाते हैं और हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमें बाइक पे से डर लग जाता है, अरे यार कौन निकला यहाँ से, जस्ट बिकॉज उनको शो ऑफ करना होता है कि मैं बाइक है और मैं चला रहा हूँ. तो वो सेफ्टी का जो गेयर है वो ध्यान में नहीं रखते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबॉडी शुड टेक केयर ऑफ इट. एवरी टू व्हीलर पर्सन शुड डू दैट. तो आपको अगर रेसर बनना है, देयर आर ट्रैक्स, आप उसको प्रोफेशनली करिए, सीखिए और जाइए. व्हाई डोंट यू ब्रिंग लॉरेंस टू इंडिया? That's what I would say. Rather than doing racing on the road and making other people's life hazardous, वो नहीं होना चाहिए उसके. एंड इस इंडिया का नाम भी रेसिंग में आया, व्हाई नॉट? Of course, like I'm happy अभी जैसे एशियाड के अंदर इतने सारे मेडल्स आ रहे हैं जिनको हमने कभी हराया नहीं, उनको हम हरा रहे हैं. We should make name in GPs also. Why not? As women, biking को लेके आप लोगों को क्या पर्सपेक्टिव? ऑनेस्टली आई थिंक एज अ वुमेन पर्सनली स्पीकिंग मुझे कभी बाइक में एक डर रहा है, जैसे हाउ शी सेड कि कि बाइक का सोचकर ही एक लगता है डर. तो कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं कि ये अवेलेबल है मेरे लिए, ये मुमकिन है, मैं कर सकती हूँ. एटलीस्ट पर्सनली मेरा कभी ध्यान नहीं गया, बट मे बी अगर ऐसी फैसिलिटीज़ है, ऐसी अकेडमी होगी, ऐसी ट्रेनिंग होगी तो मे बी मैं भी सोच सकती हूँ इस बारे में. So yes, it is a very good initiative coming down here, and I think it's high time we India also have ours. Yes. Yeah, so I just feel कि बचपन से मेरे घर में जैसे फ्रेंड्स वगैरह आते थे, देवर सबके पास बाइक हुआ करती थी, क्योंकि तब एक तरह की बाइक है हमारे पास में. तो ऐसे मुझे भी बाइक सीखनी है. तो आई यूज्ड टू राइड बाइक, मतलब बुलेट तक किया है, पर इतने सालों से छूटने के बाद में अभी ज़्यादा फैया हो गया मेरा बाइक. बट येस, आई वुड लव टू. और जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज एजुकेशन हाउ टू राइड अ बाइक इज वेरी इम्पॉर्टेंट. न खरीदने से आपको सहूलियत नहीं मिलती है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो भी बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है. So I'm very happy this initiative is there. So and लड़कियाँ बाइक चलाते हुए हमेशा बहुत अच्छी लगती oh हैं. yeah, oh yeah. I would love to sit on a book. I mean, this bike which is outside is also very. Yeah. I would love to sit on that and ride. आप तो बाइक पे बैठे नहीं, कितने आप खुशी हो रहा है बाइक पे बैठ के? देखिए क्या है ना, अदाकारा को बस बाइक मिल गई, एक्टिंग कर दो, हाँ चला लिया, फीलिंग ले ली, बहुत बढ़िया बात है. जब एक्शन करने को मिलेगा तब पता नहीं क्या होगा. आई होप आई एम सेफ. या तो सेफ्टी मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ बॉम्बे की और इंडिया की सड़कों पे चला पाऊंगी, कि मुझे डर रहेगा. जब मैं गाड़ी में बैठ के डर जाती हूँ कि कोई बाइकर निकल रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से. बट या अगर मुझे सीखने का मौका मिलेगा, और अगर नासिर जी से who come to us, if they are meant for it or not also. It's not just about giving out information. We want to tell them, we want to ask them,
We want to understand them ताकि we can guide them in the best possible manner. In terms of costing, how expensive this whole process is? See, we can't give out numbers, no offense, but it's not very expensive if you compare it to going to a local circuit in India, because you only have 2 circuits. In Dubai, you already have the concept of travel and international travel, but it's very close, the facilities are there, and it is pretty economical if you want to go to a big circuit in India, because we have the facilities with us. Agar if you see like compared to prices, we have not worked on the price yet, but still I feel like I'm being an Indian, I know the cost of the good circuit, how much they're going to charge me, and so we are making a package where any Indian, anywhere, any part of India, he's from Tamil Nadu or he's from Kerala or he's from North, anywhere, we make such a package that he can reach to Dubai more cheaper than what he can do it in India. That's a definite target for me. Yeah. What is a message that you would like to give out, just not for Indians, but all enthusiasts? Yeah, my main only one message to my Indian brothers, brothers or sisters who is enthusiastic for the racing or for the riding the bikes, please ride bikes with the full gear. Don't race on the street. If you want to race, you have DSBK now. Please come to DSBK. I'll make sure like the people of India will love to be there in DSBK, looking at the cost of it and the talent. We will give you more talent because we have people who's raised in all over the world, who's from Europe, who's from UK, who's from US. We all have a trainers. You name it, we can make them. We can make them our riders. For I'm telling you, we will get a racer from India soon, down few years. This is my podium promise. finish. Podium finish. Yeah, that's Podium the finish. thing, yeah. In 2 years, we expect to train something great, somebody great from India to do a podium finish. Also, I wanted to say, before we wind up, I would like to also check with you, other than children and men, do you also have this facility for women? Riding is a open gender We thing. have Yeah, my daughter is now, she is 14 now. She wants to practice. She wants to race, and I'm not stopping her. So I'm going to train. I started training her now. It is called mini GP bikes. Mini GP bikes. So I think India also knows about the mini GP bikes now. To start with, anyone, is it a girl or boy? So they should start from mini GP today, because I'm being an Indian. I'm riding this bike in UAE, which is Dubai. Dubai has a autodrome, which India doesn't have an autodrome at in all the cities. It's only in India is such a big country where one have to reach to a booth circuit, which is last week held the MotoGP Racing. Yes, sir. The main reason is to come to this place is because all these years, in last 10 years, I was racing in UAE. Okay, and the fastest Indian as on today on the 600 and the 1000 cc, which have achieved the mark. And I'm proud to say, like, I'm an Indian achieving in UAE and out of odds, like people coming from all over the world, which is most of them are Europeans, and which I felt like, since I'm an Indian and the MotoGPs come to India, a lot of maybe the young youth, they wanted to race. So I thought, like, I have a platform which is called DSBK, which I was organized all these years in Dubai. Why not come to India and support my people? That's the only interest which brought me here. बाइकिंग में आप जब देखते हैं बाकी, do we have more aspirants from India back in UAE or the biking culture in India? आपका क्या perspective है इस बात पे? बाइक का कल्चर इंडिया में बहुत है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है. सो व्हाट आई एम गिविंग बैक टू माय कम्युनिटी इज बाइकिंग कम्युनिटी इज द रेसिंग प्लेटफॉर्म. जिसके पास टैलेंट है उसको दिखाने के लिए इधर मौका नहीं है. सो विच आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस देम फ्रॉम DSBK what we can do. If young youth has a potential in him, I have a platform. So बस ये bridging between the gap, this is what my main concern is at the moment. I hope that convince you, like, why I'm here. Absolutely. Yeah. So when you shared this thought about the Indian community, bikers, racers, when you shared this thought with them that you're going to be arriving, announced rather that you're going to be in India, तो क्या response मिला आपको सबसे? We are announcing right now. This is the platform why we have come. While this was happening, While this was happening, everyone's excited. They want to come. They want us to come here. They also want to come to Dubai and participate. ये एक option है उनके लिए, एक opportunity है. For an opportunity to materialize, उसके लिए there has to be a definitive purpose.
उसके लिए हम यहाँ आए हैं। अगर हम इसको दुबई में करेंगे, वी वांट इंडियंस टू पार्टिसिपेट, दे एक्साइटेड, दे वांट टू नो डिटेल्स क्या है, डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे आएंगे। और हम जो नेक्स्ट ईयर इंडिया आने वाले हैं उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो भी हमारे वेबसाइट पे आएंगे। द बाइकिंग कम्युनिटी इन इंडिया इज प्रॉब्ली द लार्जेस्ट। यहाँ बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है बाइकिंग सर्किट को लेकर, लेकिन एवेन्यूज बहुत कम है। वी डोंट वांट पीपल टू राइड सुपर बाइक्स ओनली ऑन द रोड्स, दे आर मेंट आल्सो फॉर द ट्रैक्स where आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। You can probably do something great with it. So this is one platform where we want to share that ये हम करते हैं। We want the youth of India, we want the bike lovers to come on board with us. वो आए हमारे साथ, भले वो दुबई में आए रेस करने के लिए या इंडिया में हम आ रहे हैं, तो join hands with us because we all can grow only if we grow together. The excitement is already there in the market. आपका इतना एक्सपीरियंस है बाइक में बेसिकली कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे फॉर पीपल आउट देयर हु रियली वांट टू गेट इनटू दिस? सी मेरा मेन कंसर्न यही होगा कि जो भी बच्चा या समझिए कि एनी पेरेंट दे वोंट लेट देयर किड्स टू गो इनटू द बाइकिंग, बट बीइंग अ रेसर, आई एम अ रेसर सिंस लास्ट 10 years as I told you. My son is already a racer. He raced in Bahrain and he's the only he's the fastest racer on the 125cc who have not beaten any record from anywhere in the world. Okay, he is the champion in 2017 and 18 in Bahrain. So that means what I'm telling you, if any the kid who doesn't allow him to do the biking, I feel like road racing is not good. I don't encourage anybody who's doing the road racing. अभी बाइक बाहर लेकर चला गया, he wanted to race. There's an adrenaline in him. Every young kid wanted to race. But if you have you have a talent in you. So don't race on the roads. Come to the circuit. It's like boxing on the ring. Like if you're a big man, so you don't have to hit somebody who's like very weak. If you are a really good man, I mean you're a really strong man. So come to the ring and show your power. So same here. Like if you're a good rider, how you show your potential? So come to racetrack and show your potential, isn't it? So I encourage every single kid out there who's interested in racing of the biking, please join somewhere where you can show your talent. So what we mean is called responsible racing. It's a responsible racing. आपको बाइक चलानी है, आप चलाओ. You want to ride a super bike, great, but not on the roads. Come on the tracks. Tracks में safety gear है, teachers है, train करेंगे आपको, and that's where talent वहीं से निकलता है. Because when you are in a controlled environment, आप वहाँ पर हमारे trainers के साथ, the whole team of Nasir Bhai, the whole team that's there in Dubai, when you work with them, you get trained, and that's when you have responsible racing, not irresponsible. So we are here to promote that also. नासिर सर, कहीं ना कहीं इंडिया में रेसिंग की वजह से काफ़ी जाने जाती है और रेगुलर बेस पे डेली बेसिस पे जाने जाती है, कहीं ना कहीं सेफ्टी एक इशू होता है, उसमें किस तरह से आप देखते हैं? सेफ्टी इशू एग्जैक्टली लाइक अगर मैं अपना खुद का मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले दिन जब बाइक बाहर लेके गया था, I came back and thought about my biking ride, what I have done just 2 minutes ago. I went to the place where it is 100 kilometers from my house and came back and I just thought myself like अगर मैं गिर जाता, मेरा स्पीड था 200 प्लस ऑन द स्ट्रीट, अगर मैं गिर जाता तो क्या होता? ओके, मैं अगर गिर जाता, आई वॉज विद द फुल गियर, मेरे पास जूता प्रॉपर जूते थे, इंटरनेशनल काइंड ऑफ गियर, लाइक फुल सूट था, हेलमेट सही था, ग्लव्स थे, सारी चीज़ें थे. इधर जो बच्चे जो हैं रेस करना है उनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास अवेयरनेस भी नहीं है कि रेस कैसे करना चाहिए, बट चले जाते हैं, बाइक चलाते हैं और गिरते हैं, करते हैं सारी चीज़ें. लेकिन एबिलिटी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तब जाके वो अगर बाइक के गियर के साथ में चला गया और बाइक आराम से चला के अगर सारी चीज़ें ठीक है, तो सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग अभी हम लोग देंगे, ऑलरेडी मैं ट्रेन हो चुका हूँ और मैंने काफ़ी 10 साल से रेस कर चुका हूँ. आई नो एवरी बिट ऑफ रेसिंग हाउ इट इज़, बट आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस टू इंडियन किड्स. I want to see the talent in them, and inshallah, like we'll be coming soon to India by next year. By as we have discussed, like DSBK is coming to India next year, 2024. That's my main goal. इसके अलावा नासिर भाई, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया जो स्पोर्ट्स में हमें काफ़ी आगे है, लेकिन इस फील्ड में, रेसिंग के फील्ड में काफ़ी पीछे, मतलब दूर दूर तक नाम तक नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? I believe कि इंडिया में रेसिंग हैज़ ग्रेट पोटेंशियल. Every boy loves bikes. Every man loves bikes. ये आप, it's not for you and us, it's everybody.
But currently, you already have the MotoGP. We always will support what is the right thing, and it was a good initiative. So the industry is there, the potential is there, आवाम भी है, riders भी है. That is the reason. Well, Nasir bhai thought, मैं Indian हूँ, I would like to come to India and give something back to my motherland. Why not this? Because we are here to promote racing. We will do it, but responsible racing. Yeah, the reason is why India doesn't have that kind of a exposure, because इस रेसिंग के लिए यू नीड दिस सर्किट, जो इंडिया में सर्किट नहीं है. दो ही जगह हैं, ये एक गुड सर्किट है जो इंटरनेशनल लेवल का है, और दूसरा सर्किट है मद्रास में, जो मद्रास इज चेन्नई इज़, और एक सर्किट है उधर. एंड दैट सर्किट इज़ ओनली गुड फॉर लोअर सीसी विच इज़ बिलो 600 सीसी, आई थिंक सो. और जो हमारा जो मोटो जीपी होता है सारे 600 सीसी टू 1000 सीसी, और डेफिनेटली से 300 सीसी होता है, बट स्टिल इट इज़ पोटेंशियलिटी इज़ वेरी लेस. मेन थिंग इज़ लाइक वी डोंट हैव अ सर्किट इन इंडिया मैनी प्लेसेस. अभी आएंगे क्योंकि मोटो जीपी आ गया, थैंक्स टू हमारे आदित्यनाथ जी जो यूपी के मिनिस्टर हैं. तो एटलीस्ट अवेयरनेस आ गया है लोगों के पास, और एक वे है. जस्ट बीइंग अ क्रिकेटर और फुटबॉलर और हॉकी प्लेयर, वी हैव अ वन मोर स्पोर्ट विच इज़ हर बच्चा इधर बाइक चलाता है. तो मे बी कोई फुटबॉल नहीं खेलेगा, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन बाइक ज़रूर चलाएगा. चोरी करके चलाएगा लेकिन बाइक चलाएगा. राइट. सर मैं जानना तो यूथ है, आजकल युवा है काफ़ी सारे रेसिंग में है, आपसे अगर ज्वाइन करना चाहते तो कितने खर्चा लगेगा? ट्रेनिंग खर्चा है, ऐसे फ्री क्या है ट्रेनिंग? सी ट्रेनिंग के लिए ये स्पोर्ट जो है थोड़ा महंगा वाला स्पोर्ट है. इट इज़ नॉट वेरी चीप बिकॉज बाइक काफ़ी कॉस्टली है, और सर्किट क्योंकि वजह इसलिए है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इट्स नॉट एनीबडी कैन नॉट प्ले एनीवेयर, इट हैज़ टू बी ऑन द सर्किट. अगर उसको प्रोफेशनली करना है सर्किट है. और एक्सपेंस की बात है कि शायद हो सकता है कि जब तक इंडिया ग्रो नहीं करेगा इस सेक्टर में, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस सेक्टर में ग्रो नहीं करेगा, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं आएगा, तब तक सर्किट नहीं बनेंगे ज़्यादा, क्योंकि सर्किट इज़ एक्सपेंसिव. आई थिंक गवर्नमेंट शुड हेल्प द पीपल ऑफ इंडियन यूथ कि थोड़े 2-4 सर्किट बना लें, किधर भी जिसको सीखना है जाके सीख लें. जैसे सर्किट्स बढ़ेंगे रेट्स वैसे ही डाउन हो जाएगा. आज के दिन सिर्फ गुड सर्किट में है, जिधर तक पहुंचना ही बड़ी बात है. छोड़ो बाइक चलाना, उधर तक पहुंचना, समझो कि अभी मुंबई से दिल्ली जाना है तो इट्स वेरी बिग टास्क. अगर बच्चा जाएगा ही नहीं. अगर समझो कि हर स्टेट में एक एक सर्किट हो तो बच्चा डेफिनेटली. और इंडिया ऐसी जगह है, इंडिया में टैलेंट इतने कूट के भरा हुआ है. सबको पता है कि इंडिया के बच्चों में एड्रेलिन वैसे भी होता है, आई मीन इट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना. लेकिन बच्चों को एक एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी होता है. अगर सर्किट ही नहीं है तो होगा नहीं. अगर बाइक तो कैसे भी ले लेगा, लेकिन सर्किट होना ज़रूरी है. तो एक दिन हो जाएगा. अगर डाउन 10 years, आई एम श्योर लाइक इंडिया विल बी ऑन दी टॉप ऑफ द लिस्ट इन मोटो जीपी. दिस इज़ व्हाट माई थिंक अबाउट. तब तक मैं कितना देख सकता हूँ नहीं पता है, लेकिन गिवन चांस आई वॉन्ट टू गिव माई 100% टू यंग इंडियन किड्स. आई वॉन्ट टू ट्रेन दैम, मे बी ब्रिंगिंग दैम टू दुबई, मेकिंग अ गुड पैकेज के लुक्रेटिव हो जाए कि ये पैकेज है, इस पैकेज में दिल्ली जाने से अच्छा है कि मैं दुबई जाके कर रेस करके मैं प्रैक्टिस करके आऊँ. I'm there to support everyone. Even if tomorrow anybody of you want to come to Dubai and race to practice, I'm there with you guys. Yeah, Because we have the trainers, we have the safety equipment, we have the people to teach you balance, power, everything. We have lectures, we have talks, we have on-site trainers and medical facilities. Everything is there. So it is basically the more you understand and learn, the more आप उतना freedom से confidence से track पे जाते हैं. So this is just a क्या बोलते हैं ना, a kind of a शिक्षा, a kind of a teaching, a tutelage. इसके तरह आप इस ट्रैक पे जा सकते हैं. सर जो आजकल यूथ है ज़्यादा जो है राइडिंग करना रेसिंग करना जो है पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रेसिंग के दौरान जो है हादसा भी होता है. क्या लगता है कि पहले ट्रेनिंग के बाद जो है ट्रेनिंग के बाद रेसिंग? See, to be very frank with you, अगर कोई ठीक से ट्रेन किया होता है तो वो इतनी स्पीड पे रोड्स पे नहीं चलाएगा. रोड्स आर मेंट फॉर ड्राइविंग, ट्रैक्स आर मेंट फॉर रेसिंग. रोड्स ड्राइविंग के लिए होते हैं एंड ट्रैक्स रेसिंग के लिए होते हैं. तो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल रेसिंग करता है, अब इस रूम पे हमारे बहुत फ्रेंड्स आए हुए हैं, दे ऑल हैव सुपर बाइक्स, देयर इज अ बाइक आउटसाइड ऑल्सो. वो ही वोंट बी रेसिंग, दैट्स इररिस्पॉन्सिबल. जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट as DSBK, we're trying to promote this, is responsible. बड़ी बाइक का ये मतलब भी कि आप स्पीड पे चलाओ. आपको स्पीड करना है, ट्रेनिंग करना है, आप ट्रैक्स पे आइए. आप रोड्स पे रेस्पॉन्सिबली चलाइए, बिकॉज हर किसी के फैमिली होते हैं, लव्ड वंस होते हैं. आपको वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आदमी के लिए भी रखना पड़ेगा.
आपसे अगर कांटेक्ट किया जाए, जो गांव छोटे छोटे गांव में, छोटे सिटी में है, जो आपसे कांटेक्ट करें, आपसे जर्निंग करना चाहे, तो किस तरह कांटेक्ट करेंगे आपसे? कॉन्टैक्ट अपना DSBK का वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे जाएँ, उसमें कॉन्टैक्ट सारी डिटेल हैं और वी आर देयर टू सर्व। And we have people to answer the questions also. ऐसे नहीं कि हमने वेबसाइट पर लिख दिया है, we have people to answer the questions. आप क्या करते हैं, आप क्या चाहते हैं? And enquiry is also something like education for us. We have to educate people